Good morning, 10th class students. Today, I'm going to start your new topic of grammar, that is active and passive voice. Okay, we have completed our literature part for the test series. Now, this is new topic for today, right? देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है ओके इफ योर सेंटेंस फॉलोज एक्टिव स्ट्रक्चर इट मीन्स योर सेंटेंस फॉलोज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड इफ योर सेंटेंस फॉलोज पैसिव स्ट्रक्चर ओके यू हैव टू टेक ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट राइट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट like this. Okay, for example, he writes a letter. Okay, he writes a letter. Students, you know very well what is subject means the doer of the sentence, karta, that is called subject. What subject does in action form, it is called your verbs, right? And the remaining one is object, what and whom. Object always comes in a form of what and whom, right? Kya or kise. Kise means me, you, them, her, him, right? What means kya, right? The relation of object is concerned with subject and verbs. But when you are going to change passive structure, remember this thing that intransitive verbs cannot take object. That's why you can't change intransitive verbs into passive structure. So we are going to change some sentences into passive structure, not intransitive verbs, right? First of all, you take, he writes a letter. A letter is object. Writes verb, he subject, right? SVO structure comes like OVS, a letter, right? A letter is written, by him. Okay, and now you think about how can we convert these sentences into another tense. Okay, किस तरह से हम दूसरे tenses में इसे convert करेंगे. You should know about this. How many tenses are converted into passive structure and which are not changed. Okay, जो change होते हैं और जो change नहीं होते हैं. So there are 12 tenses, okay, in grammar structure. Present, past and future means 4 of each. Now out of 12 tenses, there are 4 tenses which are not changed. Okay, 4 means the last of present, the last of past, the last of future tense means present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, and the 4th one is future continuous. These 4 tenses are not changed. 4 tenses are not changed. Not change, right? I'm going to tell all these tenses. अगर आपको ये tense conversion पता है, then you can change your active into passive structure. Okay, first you take the example. For example, in present tense. Okay, first verb first form plus s or es convert into is, are, am plus third form of verb. You have to take V3 in all the passive structure. There is no any doubt. सब में आपको verb third use करना है, by use करना है. By you have to use before the objective form. मतलब जो आप subject की objective form last में लिखेंगे उसके पहले आपको by use करना है. After third form, right? Second one of present is, are, am plus first form ing, right? This structure, if your sentence follows this structure present continuous, then same auxiliary आपको use करना है plus being, right? Not being plus third form of the verb. Now third one is has, okay, or have. If your sentence presents has, have plus third form of the verb, it means you can take has been, right? Has been or have been.
Has been, have been plus be3. These three structure of present. And the last one, if your sentence follows has been, have been in your question, then do not change your sentence into passive. means आपकी helping verbs change नहीं होंगी, subject object की categories में आप change करेंगे. Now past. अब देखिए past में भी 3 हैं, किस तरह से हैं. फर्स्ट जो है, इफ योर सेंटेंस फॉलोज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, यू कैन टेक दिस सेकंड फॉर्म इनटू, किसमें चेंज होगा, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ है, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में. तो पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज, वर प्लस V3, नॉट ING, राइट. V3 आपको सब में यूज करना है. Now second, if your sentence follows was, were plus first form ING, right? Continuity में हम देखिए, continuous tense में हमें being add करना है passive में. Same auxiliaries. Same means was, were को ही लेना है according to the object. अगर object singular है then was, plural है तो were. Same auxiliary plus being plus verb third. Okay, right? Present indefinite change into present continuous, past indefinite change into past continuous, present continuous same auxiliary plus being, okay, present perfect change into present perfect continuous, like this. Past indefinite past continuous and past continuous same auxiliaries. Now the third one is, look at the board, third one is if your sentence follows had plus third form, right? Question अगर had plus third form में है, then you can take had been, simply had been plus third form. The last fourth tense of past you do not change, आपको change नहीं करना है. Okay, now future. फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर भी इसी तरह से प्रेजेंट होगा, like this. Future indefinite means if your sentence follows will, shall plus first form, it means you can take will be, shall be plus third form, right? This is first one. Second one, you do not change. Second one is future continuous. If your sentence follows will be, shall be plus first form ING, right? It means don't convert, right? No change. Now third is means future perfect. Future perfect will have or shall have. Will have and shall have plus third form. You can take this will have been or shall have been plus third form, right? In future tense, there are two tenses which can change into another one, right? Two tenses cannot change, means second one and fourth one. Second one is this and fourth one is if your sentence follows will have been and shall have been, you can't change this structure, right? Present, past and future, right? There are total 4 tenses which cannot change. These are the rules of tense changing. ठीक है, किस तरह से आप tense changing करेंगे. Now students, some sentences on the board, right? First one you have solved. Okay, he writes a letter. A letter is singular number, that's why a letter is not R. Okay, this shows present indefinite. You have to convert this in present continuous. A letter is written by him. By him means if your subject is he, subject देखिए, subject and objective form, he, she, they, you, right? We, he, she, they, you, we. He change into him, right? She, her, they, them, you, same, you, we, us, right? You have to take these objective form at the last when you are going to change these subjects into objective form, right? तो he यहाँ पर है तो आपको लास्ट में by के बाद लिखना है him. Okay, she prepares dinner daily.
राइट तो डेली तो ऑब्जेक्ट है नहीं, राइट डिनर क्या, वो क्या प्रिपेयर करती है, शी सब्जेक्ट करता, ओके डूअर ऑफ दिस सेंटेंस प्रिपेयर्स व्हाट शी डज, राइट एक्शन में वो क्या करती है, प्रिपेयर्स डिनर क्या ऑब्जेक्ट है, ये डेली को हम देखें कैसे लेते हैं, तो शी प्रिपेयर्स डिनर, तो डिनर को हम सबसे पहले लेंगे, राइट डिनर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डिनर आर तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, डिनर इज prepared, dinner is prepared by her daily, okay at the last you can add the remaining part daily. You are telling good stories, then what you are telling, good stories, right तो good stories पहले आ जाएगा, good stories, राइट गुड स्टोरीज, तो मैंने आपको कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आपको सेम लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट नंबर, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उस अकॉर्डिंग से वॉज वर या इज आर लेंगे, और अगर आपका सिंगुलर है तो गुड स्टोरीज आर, ठीक है वर नहीं हो सकता, सेम टेंस में आपको लेना है, गुड स्टोरीज आर थर्ड फॉर्म, टोल्ड तो आएगा, तो क्या ये टोल्ड सही है, इज इट करेक्ट, नो केवल टोल्ड यहाँ पे ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज आर बीइंग, ओके आर बीइंग टोल्ड बाय यू, राइट क्लियर, यू सेम रहेगा, बाय यू मैंने उधर लिखा है, they have scolded you for shouting, तो they have scolded means has have, you have to take like has been or have been according to the number, तो they have scolded you, तो for shouting so तो हम start कर नहीं सकते, we can't start you, right तो to whom मैंने कहा था ना, to whom का जो रिप्लाई आए वो भी ऑब्जेक्टिव कैटेगरी, ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है, they have scolded you, उन्होंने किसे डांटा, राइट you, तो you को हम सबसे पहले लेंगे, at the first you have to take you has have, according to this has been have been, तो you have been third form scolded, right you have been scolded for shouting by them, right she was creating a problem, then what she was creating, right a problem was, प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स होता तो हम वर्ड यूज करते, प्रॉब्लम है सिंगुलर है, देन was, अ प्रॉब्लम was being आ जाएगा यहाँ पर ing, राइट अ प्रॉब्लम was being created by her, okay clear, these are the simple structures, ये simple sentences थे आपके। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, ओके वी आर गोइंग टू टेल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ओके वो डिफरेंट कैसे है देखिए, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन योर सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब you have to take the helping verb of another tense at the first place in the same position, अगर आपका sentence helping verb से start है, for example do you create some problem, right question mark, do you take some problem or do you create some problem, do helping verb, okay तो आपको helping verb से ही शुरू करना है, अंतर ये होगा what is the difference between question and answer, the helping verb which you are taking at the first and answer, that helping verb should be related with your converted tenses, okay do you create present indefinite, आपको present continuous में convert करना है, तो some problem के according are तो आएगा नहीं, am तो आएगा नहीं, is, okay तो some problem is some problem, right is some problem created by
यू क्वेश्चन मार्क सेम. देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट इनटू सिंपल वन, बट इन पैसिव स्ट्रक्चर द सेम फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो. अगर सेंटेंस जिस फॉर्मेट में है, फॉर्मेट यानी कि इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से ही आपको स्टार्ट करना है आपका पैसिव, और आंसर आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, राइट, जिसमें आपका आंसर कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट आर यू cooking the delicious food, right? Are you cooking the delicious food? तो delicious food क्या, ओके तो सबसे पहले हम द डेलिशियस फूड की अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो आर है, इज आर एम को हमें सेम स्ट्रक्चर में लेना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. तो डेलिशियस फूड के अकॉर्डिंग इज आएगा, तो आपको इज यहाँ यूज करना है. इज द डेलिशियस फूड, बीइंग आपको ऐड करना है इसके बाद इंट्रोगेटिव में, बीइंग राइट कुक्ड बाय यू. ओके अब हम लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे. देखिए कैसे, वाई हैव you stolen my watch? Look at the board carefully, right? Why have you stolen my watch? तो why की जगह आपको why ही लिखना है. If your sentence start from any WH word, why, what, where, when or how, right? These WH words need to be present here same. यहाँ पर present आपको same करने हैं, ठीक है. उसके बाद आपको helping verb use करनी है, that helping verb which you are going to be converted into another one, ठीक है. why has है, आपको हमें has been और have been में convert करना है, तो my watch के according आपको क्या use करना है, has been. why has my watch, अब has been एक साथ तो आ नहीं सकता. why has my watch been stolen by you? Question mark, right? These are the interrogative structure. Yes students, now simple structure, interrogative structure completed. Now I am talking about imperative sentences में देखिए, in imperative sentences there are some parts, means commanding part or ordering part, requesting part, forbidding part. Okay, like this you have to take these sentences. Do you work on time? For example, if your sentence starts from first form of verb means sing your song, do your work, go from here, move from here, shut the door, shut the window. Okay, if your sentence is starting from first form of verb, it means this sentence relates with commanding part or ordered, right? तो आपको यूज करना है you are ordered. For example, do your work on time. तो do यहाँ पर क्या है, यहाँ पे auxiliary form नहीं है, ये do यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे जो हम ऑर्डर में यूज करेंगे, तो यू आर ऑर्डर टू डू योर वर्क ऑन टाइम. इसके दो और मेथड्स हैं. देखिए लेट से भी शुरू हो सकता है और उसमें शुड भी यूज हो सकता है. तो लेट और शुड भी हम कैसे यूज करेंगे, इफ यू आर यूजिंग लेट, ओके, एट फर्स्ट यू टेक लेट, then object, then be, then third form of verb. For example, let your work be done on time. नेक्स्ट योर वर्क, तो इसमें जब हम शुड बी यूज करेंगे तो एट फर्स्ट यू कैन टेक ऑब्जेक्ट, योर वर्क शुड बी डन ऑन टाइम. ओके, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, योर वर्क शुड बी डन, और रिमेनिंग है तो उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं रिमेनिंग सेंटेंस. प्लीज कीप दिस सीक्रेट. तो अगर आपके सेंटेंस में प्लीज ऐड है, सिंपल रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू. इतना सेंटेंस आपको लिखना है और आपको प्लीज यूज नहीं करना है, राइट. यहां से सेंटेंस सेम आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दिस सीक्रेट. नेक्स्ट देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब माई क्लास. तो डू नॉट डिस्टर्ब में आप यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. यू आर ऑर्डर्ड
नॉट टू आपको इतना यूज करना है आपको, बाकी आपको सेम सेंटेंस लिखना है, राइट। सेम कहाँ से लिखना है, डिस्टर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जहां पर है वहां से आपको सेम सेंटेंस लिखना है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, अगर आप ऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं, एडवाइज यूज कर रहे हैं, तो आपको नॉट टू यूज करना है। यू आर एडवाइज नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, इसमें आप दोनों केसेस यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस में लगता है कि ये कमांडिंग का रेशियो इसमें ज्यादा है एडवाइज से, तो उसमें आप ऑर्डर यूज करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कमांडिंग या ऑर्डर का रेशियो थोड़ा सा कम लग रहा है और इसमें एडवाइस ज्यादा हिडन है, तो उसमें आप एडवाइस यूज करो। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, राइट। बाकी सेंटेंस सेम लिखना है। डोंट स्मोक, तो इसमें देखिए ये ऑर्डर गलत नहीं होगा, लेकिन ये एडवाइस ज्यादा है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ये भी सही है। और दूसरा अगर हम करें, यू आर फॉरबिडन, क्या होगा, यू आर फॉरबिडन टू स्मोक। अगर आप फॉरबिडन यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप नॉट ऐड नहीं करेंगे। यू आर फॉरबिडन टू स्मोक। और यदि आप ऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें नॉट यूज करेंगे। और अगर आप यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, राइट, इस तरह से यूज करेंगे। क्लियर? I hope you got all these sentences carefully. Okay, read and listen my sentences, what I have told you, what I have explained. Thank you.